guys, मैं हूँ फैक्ट guys. The demon fades, the lights spin. I am the shadow, I am the winds. अबे 2 मिनट. तो हेलो गाइस, मैं हूँ फैक्ट गाइस एंड आज हम फिर से करने वाले हमारी 30 स्पेशल वीडियो. सो स्पेशली हमने 30 पार कर लिए थे पर हमको कुछ आइडिया नहीं था. सो ये है 30 स्पेशल वीडियो. इसमें हम देखने वाले हैं कुछ हॉरर, वो भी ऐसे में रात के 3 बजे. सांस फूल रही है तो भी मैं बैठा हुआ हूँ आपके लिए. तो सब्सक्राइब का बटन जो लाल है वो अगर आप देख लिए हो तो उसको ग्रे कर दो एंड ब्लू वाला बटन भी ग्रे कर दो. ओके, अब बढ़ते हमारे वीडियो की तरफ. बहुत ही ज़्यादा हो रही है. स्टार्टिंग कैसी थी कमेंट करके ज़्यादा बताना. ये कोई सिंपल टॉपिक है, टॉर से वो बच्चे नहीं करते शॉपिंग, तो इसे मैंने किया है. सो अब बढ़ते वीडियो की तरफ एंड लेट्स गो. तो देखो हमारा सबसे पहले पीठ. तो ये देखो ये आ चुका है हमारा बदमाश. देखो मैं कोई ऐसा डॉग नहीं हूँ जो तुम्हें डराए. इसका बेस्ट फ्रेंड. जी हाँ, तो ये मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम मैंने रखा है रामपुरी. चाकू नहीं है बट मेरा सबसे छोटा था तब से ये मेरा सबसे फेवरेट था. एक माउस है भाई, सबसे बड़ा माउस. तो आज ये भी हमारे साथ वीडियो देखने वाला है, तो लाइक तो करना ही. तो तू कहाँ पर बैठेगा? यहाँ पर. वेट उस स्क्रीन की बाजू की रिकॉर्डिंग में बताता हूँ. ये देखिए यहाँ पर बैठने वाला है. ऐसे तो मैं नहीं दूँगा. 2 मिनट में सेटिंग करके दिखाता हूँ. वेट, तो इसका हमने सेटिंग कर डाला है, ये देख सकते हैं आप. ओके, तो यहाँ पर इसका हमने सेटिंग कर डाला है, ये देख. सब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर पहले दिखतेगा. हम सर्च करने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम सर्च करने वाले हैं यूट्यूब पे. हम सबसे पहले सर्च करेंगे यूट्यूब पे. बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है. हम सबसे पहले सर्च करेंगे यूट्यूब पे द स्कैरिएस्ट प्रैंक, द स्कैरिएस्ट वीडियो. तो स्कैरिएस्ट बहुत ही डरने वाला हूँ सीरियसली. ये वाली जरान है आज, बहुत ही डरने वाला. दिखा दो पर ये नहीं. ये वाली जरान है, प्लीज नो. कुछ अलग दिखा दो पर ये नहीं जरान है. पीपल कैन वॉच. सीरियसली मैं ब्रेव नहीं हूँ. ओनली ब्रेव पीपल कैन वॉच दिस. सीरियसली मैं ब्रेव नहीं हूँ गाइस. लेट्स वॉच दिस. Number 15, Bedroom Exorcism. If you think you can brave these 15 videos, then you're braver than most. Our first entry has been getting big attention. आवाज बंद करने वाले हैं क्योंकि मेरी कमेंट्री चालू है. Exorcism on a girl who clearly looks unwell. There's 2 eggs on this plate. The priestess cracks one egg and it appears perfectly normal. But after rubbing the other egg on the possessed girl's skin, it cracks open to a pure black sludge, which is an extremely creepy sign. But things get even more bizarre as the girl sits up with very dilated eyes and drinks the sludge, which causes her to shake and twitch, and the full video cannot be found on YouTube because it gets even more disturbing. I think only seeing this part of the ordeal is enough to terrify anyone who isn't brave. Number 14, hand on shoulder. You never know when you'll face passing on. So what happens when it's not yet time for you to go? A shopkeeper in Adana, Turkey, escaped after a man passing by touched his shoulder and warned him to look behind him, alerting the oblivious man to the fact that the cover of a passing truck's back end was open. The metal piece flung toward him, but he managed to move out of the way to avoid getting hurt, or much worse. It's unclear from the footage how the passing man even knows to warn him. He hadn't even turned around to look at the approaching truck before reaching out to the shopkeeper. Guardian angel? Your guess is as good as mine. Number 13, Poltergeist. We've all been there. It's a stormy night,
Every sound in the house is an evil entity vying for your soul. That must have been what this man was feeling when he saw this happen in his dining room on a stormy night. The clip shows a man enter his dining room, which appears completely normal. Every chair in place. He enters his laundry room, then casts the camera down the stairs. It appears that something must have happened to cause him to search his house. He says hello down the stairs. Is someone or something there? He decides to go into his basement to investigate. The wooden steps are incredibly rickety. As he's nearing the bottom, a terrifying racket is heard upstairs. He runs for his life, only to find his kitchen chairs precariously stacked up, balanced one on top of the other. The dining room light is swinging around. The shot is still as the man crosses the room and stands frozen in fear at this ominous sight. The overhead light continues to swing, and nothing is there. There's something especially uneasy about the stacking of this man's furniture. Part of that 19 एक काम करते हैं 5 मिनट का देखते हैं 19 के आधे की आफ्टर अगर आपको ये अच्छा लगे 5 मिनट का देखते हैं हमारा लाइक एम है 10 अगर आपको ये अच्छा लगे अगर आप पूरा करते हो लाइक करके हमारा लाइक एम है 10 लाइक दूसरे पार्ट अगर आप पूरा करते हो ऐसे 5-5 करके दूसरा पार्ट करूंगा जिसमें हम दूसरे पार्ट का वीडियो ऐसे 5-5 करके हम पूरा वीडियो देखेंगे 19 मिनट का वीडियो YouTube असिस्ट ही नहीं कर पाता हमारे क्योंकि हमको वेरीफाई करनी पड़ती है तो लाइक करना अब हम चालू करते हैं. Uneasiness comes from the fact that no human could have done this particular building job in the short period of time that the man was away. Who do you think did it? Or what? Number 12. The swarm. If insects aren't your thing, then this entry will highly test your bravery. This footage is of an insect swarm at the Cape of Good Hope in South Africa. The uploader writes, during our family holiday in 1996 or 7, we had parked the car and gone for a short walk up the cliffs. When we came back, we found that our car had become a hotspot for these giant wood lice, sea slaters. The clip shows piles upon piles of wood lice crawling around the car tires, an absolutely terrifying sea of insects, all coalescing beneath the vehicle. As the uploader says, probably attracted to its cozy comfiness. After seeing this, would you be brave enough to climb back in and leave? I thought not. Number 11. Dog in crisis. Everyone who owns a dog knows that they can sense things we humans don't. Posted by Redditor TrueBone02, he writes, I think my dog had a crisis, and he isn't wrong. The video shows two dogs standing on a day sofa, looking out the window. The bigger one really starts to panic. Its legs क्योंकि मेरे है ना नीचे सब कोई सोते हैं मेरा भाई बाजू के रूम में सोता है स्टडी रूम में मैं यहाँ पर सोता हूँ नहीं दिखा सकता मुझे अकेला सोना है तो प्लीज 5 मिनट से ज्यादा मैं नहीं दिखा सकता YouTube पे देख रहा हूँ तो कॉपीराइट नहीं प्लीज ओके चालू कर pushing the sofa so far from the window that he's stretched pretty impressively until he absolutely can't stretch anymore and pops down to the floor. Meanwhile, a number of orbs appear throughout the clip, drifting across the room. Is something outside spooking these dogs? Or is it something paranormal inside? After all, those orbs certainly point towards the latter. If only these dogs could talk and let us know what the answer truly is. Number 10. Water warning. As we've said many times on this channel, nature can be a frightful thing. That statement is confirmed in this video posted by National Geographic in July of 2017. National Geographic describes what you're about to watch. Massive flooding has produced scenes of destruction and rescue in southern and central China. In one scene, a man is holding on for dear life to the side of a garage door as the waters rage around him. The water is flowing rapidly only about a foot from him, as he hides in the somewhat calmer waters out of the path. The water surrounding him is up to his chest.
In the clip, you can see a rescue unfold as a man stands atop a ledge with some rope length of fabric tied around his waist, while the man below holds on tight, being taken by the water's heavy flow. Somehow they manage to lift the man out of the waters, pulling him to safety. Truly a heroic save in a seemingly horrifying situation. Number 9. One of them moves. A doll with a creepy aura is chilling enough. So what happens when the doll actually moves? The G Team Paranormal Investigators posted this video to YouTube in March of 2019, writing, "After my recent video with Omar, I decided to take his haunted dolls home with me that night. I did not bring them inside my home. I left them in a shed out back. After watching back the video I did with Omar a few times, I decided to introduce his dolls to mine and turn the camera on. The video reveals an unsettling movement. As Patty, the host, is talking about the dolls, you can see one of the porcelain dolls' heads moves ever so slightly. Because I don't want to keep her, but I'd like her to go to a good home. I mean, if there's somebody out there that's interested, I don't. Did that thing just move? As if she's listening. Is she? If she is, does she like what she's hearing? She must not have gone full on Chucky when the camera stopped rolling. So we can assume so. प्लीज लाइक शेयर तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब बैक टू गाइस एंड 3 बजे तो करना है। इतना साहसी हूँ कि मैं रात के 3 बजे मैं जाग के ये चैलेंज कर रहा हूँ। रात के 3 मेरा बजे बाजू की खिड़की से मैं जाग के ये चैलेंज कर रहा हूँ। उसको उठाने नहीं मेरा वाला हूँ। बाजू की खिड़की से मैं देख सकता हूँ। मेरे सो साथ गया के अभी लिए 1 लाइक उठाने बनता नहीं है वाला हूँ मैं एंड सोने वाला हूँ। मेरे साथ के लिए 1 लाइक बनता है हम इसकी एंड नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इनको तो इस वीडियो पे 10 लाइक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसके लिए तो 1 लाइक एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो इसके लिए तो 1 लाइक बनता है। Please subscribe to Fact Guys and please subscribe to मेरे like बटन आप गुजराती बोल सकते हो आपको समझ में आ सकती है। गाइस आप गुजराती बोल सकते हो आपको समझ में आ सकती है। प्लीज कमेंट मी एंड थैंक यू टू एमटी मराठा जिसको टीम में ज्वाइन किया। तब के लिए तो थैंक यू एंड मिलते अगली वीडियो में तब के लिए बाय बाय अगली बार एंड देखते अगली बार मिलेंगे।